Hello students, this video I have made in the continuation of the mathematical induction. There are some questions which are based on the divisible or multiple by 3, by 7, by 4 means the given expression you have to show it is divisible by 3 or divisible by 7 or multiple by 64 मतलब किस तरह से क्वेश्चंस होंगे. तो लाइक इन दिस बुक अंडरस्टैंडिंग ISC मैथमेटिक्स क्लास 11th by ML Agrawal. So you have the exercise 4.2 in the mathematical induction and question number 14. Show that 2 the power 2n minus 1 is divisible by 3. Show that 2 the power 2n minus 1 is divisible by 3. This you have to show. How to show? In this case, first of all, you have to use the basic step. तो सबसे पहले बेसिक स्टेप्स यूज करेंगे. तो बेसिक what you have to use in the basic step, that is you put n is equal to 1 and show that this is divisible by 3. We put n is equal to 1 and then Pn is equal to 2 the power 2n minus 1. So in this 2 the power 2 into 1 minus 1, that is 4 minus 1 is equal to 3, and 3 is divisible by 3. So this is you can say the P1 is true because 3 is divisible by 3. So the basic step is proved. Thereafter you have to proceed for the induction step. So induction step, in the induction step, the first part we assume that Pn is true for n is equal to n. मतलब ये ट्रू है कि it is divisible by 3. So therefore 2 the power 2m minus 1 is divisible by 3. तो अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय किसी नंबर से होता है, it means this gives the integer. That actually if 6 is divisible by 3 you will get 2. If minus 21 is divisible by 3 then you will get the minus 7. Means integer only you will get after divisibility. मतलब कि ये अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो it means you will get an integer. तो this is the 2 the, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो is equal to 3i, equation number 1 is for example this. Now this is the equation 1. Second part you have to show. Now we have to show that it is En is true for n is equal to m plus 1. अब उसमें क्या करते थे, जो स्टेटमेंट होता था इज इक्वल टू हम दोनों तरफ ऐड कर देते, बट यू विल नॉट ऐड हियर बोथ द साइड्स, ओनली फॉर दिस we use left hand side of equation 1 and put m is equal to m plus 1. Okay, then show that रिजल्टेंट मतलब जो आएगा रखने के बाद रिजल्टेंट एक्सप्रेशन is divisible by
3। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखें टू द पावर 2 m plus 1 minus 1, ओके, एंड देन यू हैव टू शो दिस वन इज डिविजिबल बाय 3। तो इसको आगे फर्दर करेंगे तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 to the power m plus 2 minus 1। कैन यू राइट दिस to the power 2m as to the power 2m into to the power 2 minus 1, okay, and after getting this one can you write this 4 into to the power 2m, और अभी जो रिलेशन 1 था दिए इज इक्वल टू i 3i, सो इसको हम इतना लिख सकते हैं 3i plus 1, 3i plus 1 you can use in place of to the power 2m here। तो यहां पे आ जाएगा 3i plus 1 into 4 minus 1। अब यहां पे लिख देंगे यूजिंग 1, जो इक्वेशन 1 थी, अंदर मल्टीप्लाई करें 12i 4 minus 1 that is 3। तो कैन यू से दिस इज नाउ divisible by 3? Yes, it is divisible by 3 and shows that the expression to the power m minus 1 is divisible by 3 by mathematical induction. So hence it is proved. So by this way you can prove the mathematical induction. Second question, in the next question in this case, suppose you have the 17. Say prove that 7 to the power n minus 4 to the power n 3 to the power n is divisible by 4, is divisible by 4। this you have to show, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 4 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले लेट कर लो इसको pn, लेट pn is equal to 7 to the power n minus 3 to the power n, and use the basic step। basic step again, n is equal to 1 you put, now we put n is equal to 1, इसको इक्वेशन 1 ले लिया मान लो, इन इक्वेशन 1, तो what you will get, p1 7131 that is 4। क्या ये 4 से डिविजिबल नहीं है? yes, which is divisible by 4, which is divisible by 4, so p1 is true। ये हो गया फर्स्ट बेसिक स्टेप। देन द इंडक्शन स्टेप, अगेन I said there are the two parts। first part, we assume that Pn is true for n is equal to m, for n is equal to m for all natural numbers। so in this case if you put n is equal to m in the equation number 1, so what you will get, 7 to the power m minus 3 to the power m is divisible by 4। तो डिविजिबल बाई 4, तो इसका मतलब ये कोई इंटीजर देगा, और इंटीजर देने में ये मतलब कोई भी नंबर डिविजिबल होगा तो ऑलवेज गिव्स द इंटीजर। सो नाउ यू कैन राइट लाइक दिस। अब इसको और थोड़ा सा अगर हम कर दें तो ये 4i के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंडक्शन दैट यू हैव टू शो, नाउ वी हैव to show that Pn is true for n is equal to m plus 1। अब m plus 1 अभी हमने बताया कि सिर्फ for this we put m plus 1 in LHS of इक्वेशन नंबर 2, इसमें रखना इक्वेशन नंबर 2 में रखना, एंड देन यू शो दैट इट इज डिविजिबल बाय 4। तो सबसे पहले LHS ये है हमारा,
तो 7 to the power m plus 1 minus 3 to the power m plus 1. This you have to show in place of m you have to put n plus 1. तो this you have to show this is divisible by 4. अब कैसे 4 के इक्वल शो करेंगे? क्या इसको हम इतना लिख सकते हैं 7 to the power m into 7 minus 3 to the power m into 3? Yes, you can write. And can you use the equation number 2? किसी एक को, जैसे ये है, ये उधर चला जाए तो 4i plus 3 to the power m हो जाएगा. तो in place of 7 to the power m you can write this in terms of 3 to the power m. So now we put the value of 7 to the power m from equation 2. अब इसमें हम रख देते हैं इस वाले, तो what you will get 3 to the power m plus 4i into the 7 minus 3 to the power m. इसको नहीं चेंज करना है, अब 7 को इधर, तो 7 into 3 to the power m plus 28i minus 3 into 3 to the power m. 7 into 3 to the power m, 3 into 3 to the power m. What you will get? माइनस कर दे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 minus 3 that is 4 into 3 to the power m plus 28i. अब 4 दोनों से कॉमन ले सकते हैं तो क्या आएगा plus 7i. Can you say that this expression not divisible by 4? Yes, it is divisible by 4. So it shows, ये तुमको दिखाना है कि the given expression is the divisible by 4 and it is definitely divisible by. तो ये दिखाई पड़ रहा है कि 4 फैक्टर आ गया तो it is divisible by 4. Now one more question in this where the if multiple, तो मल्टीपल में भी यही चीज करनी है. जैसे 19 क्वेश्चन है मल्टीपल 3 to the power 2n plus 2 minus 18. You have to show that 2n plus 2 minus 18 minus 9 is multiple of 64. इसका मल्टीपल है. मल्टीपल ऑफ 64 का मतलब ये हुआ कि 64 1 जा 64 2 जा 64 3 जा, मतलब कि ये 64 जरूर आएगा इसमें. मतलब इसको अगर हम 64 से डिवाइड करें तो दिस विल गिव द वन इंटीजर वैल्यू. द सेम थिंग जैसे ये सब कर रहे थे अभी वैसे ही करेंगे. तो सबसे पहले लेट करें, लेट Pn is equal to 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9. अब इसको हम इक्वेशन 1 ले सकते हैं. नाउ बेसिक स्टेप, you have to put, we put n is equal to 1. तो P1 is equal to 3 to the power 2 into 1 plus 2 minus 8 into 1 minus 9. तो 3 to the power 4 minus 17. 3 to the power 4 means 81 minus 17 and this is equal to 64, which is divisible by 64. Therefore, you can say P1 is true. ये इसमें सिंपल बस केवल n की वैल्यू 1 रखना है. नाउ द इंडक्शन स्टेप हमने बताया first part we assume that Pn is true for n is equal to m plus 1. वो n is equal to m and put in the equation number 1. जहां पे n था वहां पे m रखते हैं. तो what you will get now, it will be the 3 to the power 2m plus 2 minus 8m minus 9 is multiple of 64. मल्टीपल ऑफ 64 का मतलब 64 से ये डिवाइड होगा तो किसके इक्वल आएगा, किसी भी इंटीजर के इक्वल आएगा. तो यू कैन राइट लाइक दिस
equation number 2. Thereafter, the second part, now we have to show that Pn is true for n is equal to m plus 1. For this, we put m plus 1 in place of m in LHS of equation number 2. इसमें रखेंगे, तो जब रखेंगे तो क्या आएगा 2m plus 1 और ये plus 2 minus 8 m plus 1 और minus 9. Now you have to show this one is multiple of 64. तो इसको 64 के मल्टीपल में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? यूजिंग इक्वेशन नंबर 2. लेकिन सबसे पहले इस 2m को हम इस तरह से बना लें और इसके बाद इसकी वैल्यू उठा करके ये इसमें रखना है. तो पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो 3 to the power 2m plus 2 और ये plus 2 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर. कैन यू राइट 2m plus 2 और plus 2 you can write into 3 square minus 8m minus 8 and minus 9. Clear? Now this 3 to the power 2m plus 2 is here also in equation number 2. So can you write that this is equal to this 64i plus 8m plus 9. इसको उधर ले जाए तो ये रखेंगे 8m plus 9 plus 64i in place और ये 9 minus 8m minus 17 using equation 2. मतलब इसका इक्वेशन का 2p2 का यूज करते हैं. नाउ मल्टीप्लाई एंड सी द वैल्यू. 9 8s 72, 9 9s 81, 9 into 64i minus 8m minus 17. 72m minus 8m, how much? 64m plus 81 minus 60, 64 plus 9 into 64i. अब देख लीजिए कि in every term 64 is there. It means 64 you can take common. So m plus 1 plus 9i. Can you say this expression is divisible multiple of the 64? Yes, दिखाई दे रहा है कि ये 64 का मल्टीपल है, तभी 64 आया है. तो it is multiple of, so you can write the above expression is multiple of 64. It should. Hence p n plus 1 यानी n m की जगह n plus 1 रखेंगे. It is true. So by this way you can get the answer solution of the questions based on mathematical induction exercise 4.2. Thank you.